हेलो गुड मॉर्निंग एंड आज द टाइटल सेज कि 2 दिन में गोवा घूम सकते हैं. यस वी कैन. सो इट्स अ वर्क ट्रिप. अभी बज रहे हैं 6:20 इन द मॉर्निंग. मेरी कैब आएगी 6:45 पे. मेरा नाश्ता यहाँ पे अभी बन रहा है एंड यहाँ से हम निकलेंगे टुवर्ड्स एयरपोर्ट. सी यू. Just reached the airport. So yeah, this is my first flight after COVID and काफ़ी सही, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ के मुझे, बिकॉज 11 महीने बाद मेरी पहली फ़्लाइट है एंड आई एम साइक्ड अबाउट इट. एंड यहाँ से मेरा पहला बोर्डिंग पास मैंने ले लिया है. आई एम गोइंग टुवर्ड्स मुंबई एंड वहाँ से लूँगा नेक्स्ट फ्लाइट फॉर गोवा. सो फॉर द गुड एंड मास्क ऑन. देखते हैं कैसे रहता है. And look who's here, the very own Bunny Bunny. So we are going to Goa. साथ में सामने प्लेन है एंड हम जा रहे हैं गोवा पौड़ी करने. And we have reached Mumbai. एंड हम पहुंच गए हैं इन द W होटल गोवा. देखो ये बी रोल इस कमरे का. सी सो या आई एम ऑल सेट टू लीव. रेडी हो गया अपने अटायर के अंदर एंड मैं निकल रहा हूँ यहाँ से टुवर्ड वागाटोर बीच. तो लेट्स सी व्हाट आई फाइंड ओवर देयर एंड कीप यू पोस्टेड. बाय.
So guys, I'm back from the beach. Ready हो गया हूँ because now we have the Mercedes dinner and party at Thalassa. तो अभी बस यहाँ से निकलने वाले हैं. चलो चलते हैं अब. Good morning to all. Second day in Goa and the last day in Goa as well. तो आज बहुत काम करना है. अभी जस्ट उठा हूँ मैं, फ्रेशन अप हुआ हूँ एंड यहाँ से head towards the breakfast and breakfast के बाद we'll gonna shoot the car the whole day and उसके बाद शाम को फ्लाइट है एंड दिल्ली वापस. So yeah. So yeah, this is the W hotel. So उठ गए थे मस्त. I told you we had a breakfast at the Spice Garden in W hotel itself. अभी we are chilling over here in this lobby area. उसके बाद we'll go for a drive in our car. So right now we are at Martin's for our lunch. Martin's Corner, a very famous place. So let's enjoy the meal over here. And yeah, we are finally done with the food as well. If you are a seafood lover or non-veg lover, then do come over here. And with that, we come to an end of this Goa vlog. And आपको मज़ा आया है, then please do comment, like and subscribe to my channel. And I'll see you in the next video, next travel vlog or something else. So bye bye, take care, see you.